ये कर दूँ Good morning everyone. नमस्कार. प्रियंका साई, गुड मॉर्निंग everybody. Good morning. Yep. I hope I am audible, right? ठीक है जी, I'm audible ना. केमी चलची तो प्रिपरेशन केमी चलची. Hope everybody is doing preparation. जल्दी preparation करছো तुम है ना. Okay. ठीक है जी. Last class mean एटा तो नुआ channel अच्छी. Please मैंने एटा निजे सांगो कोई subscribe करे अपनी and more so previous videos उड़ा मोर Vedang channel अच्छी. Okay. My videos are in the Vedang channel. Seti around 11 videos अच्छी. So you can watch many previous videos in that channel. ठीक है. एठी हमर एठी it's exclusively for civil services. Okay. So without wasting time, so I mean Vedang, I mean we are Vedang team. I mean we are powered by Vedang Institute of Technology. So do I mean scan this Telegram ID to join. ठीक है. Vedang channel. This is the Adarsh batch going on YouTube and it's fully free. And premium, we also provide premium content here also, and this is the batch timings, right? At a timetable change me and Sujata ma'am are doing alternate days, right? I mean do one thing, me and Sujata ma'am are doing for I mean coming for alternate days at 9 and 10 a.m. 5 to 6:30 p.m. ethics and ethics, yeah. And Sudip ma'am, they are doing alternate 7 to 8 p.m. Chandan sir, KDS sir, they will be having alternate time. ठीक है. So it is our perfect timing, so you can watch. ठीक है. And this is the price category for the trust batch, Biswas batch. 1 year validity is 4,500. है ना. एटा भी माने this is not too much, right? मैं civil service पढ़िचो, so this is a very reasonable prices compared to the market prices. और एटा लगी pre plus mains 1.5 वर्ष validity अच्छी, so use this opportunity wisely, है ना. 10,000 रे you are getting premium content, that too for civil services. आपण monthly CA practice करन तो please mains PYQ पाए. ठीक अछि ना. I mean okay. I will माने आपण इंस्टीट्यूट रे कहि दियन तो मु कर देबी, नले मु किछि क्वेश्चंस आनिबी मंथली सीए पई, तो इट काइंड ऑफ मैराथन जदी ही परिवती कर देबी. ओके. Any demand is there, I can fulfill. ठीक अछि. So it's a mains batch. If you're appearing for the mains batch, you can go for 7,500, right? Question. Okay. And optional batch, I'll be taking optional batch, and this is 4,000, very reasonable, 1 year validity, and optional EBITDA में पढ़िबा, right? If we read optional from now on, then at least तमे prelims पूर्व 70 to 80% optional complete है तो. So after clearing the prelims एते किसी problem होबनी. And optional for the political science कौन अछि, ता भीतर GS1, GS2, GS3 and GS4 all is covered. माने बहुत सारा portions are covered of I mean GS portions are covered, है ना. सेते पई do go for my optionals like PSIR. ठीक अछि. So I'll be mentoring PSIR optionals if you want to join. ठीक अछि. So anyways, let's get back to the topic. Any other demand is there, I mean CA related, if you want, है ना, so do give the feedback. ठीक अछि.
इंस्टीट्यूट को फीडबैक दे दो सो आई विल बी टेकिंग इफ यू वांट तो मु सीए रो करंट अफेयर्स नै जीबी लाइक नवंबर हेगला एनी यदि तार नवंबर किसी जिनस घटी पॉलिटिकल पॉलिटी हेगला या इकोनॉमी हेगला या सो आई कैन मेक सम क्वेश्चंस एंड ता तो मु रिवाइज कर देबी ठीक अछि करंट अफेयर्स रिलेटेड कहीं ता तो स्टैटिक पार्ट टा भी मिक्स करी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स पार्ट टा तो से फॉर्मेट टा सेमित रह ठीक अछि जोतरे तुमको यूजफुल भी हो आउ राइट तापर एंड आउ किसी जदी अछि देन यू हां सर सेमिति कर हां मु सेम एक्चुअली इफ यू हैव सीन माय क्वेश्चन सेमिति थाए स्टैटिक पार्ट भी थबो एंड करंट अफेयर्स पार्ट भी थबो राइट so don't worry hey jibo amar eti I mean your wishes are my command so hey jibo don't worry so it will take time mane question prepare kari banela na around 5 to 6 days lagibo so question should be at that level na set level the questions hele you can I mean at least amar revision भी hey jibo static part ro भी hey jibo and current affairs part ro भी hey jibo ठीक अछि आजी टिके आजी हम टिके पॉलिटी भी देखिया इकोनॉमी भी देखिया और टिके वर्ल्ड अफेयर्स देखिया ठीक अछि ओके सो बट सिस्टमैटिकली आनंद पूरा मंथ रो ओके ठीक अछि ओके ठीक है हेक्टिक काम बट हे जो ओके so let's get back to the topic it is going to article 141 was in the news है ना supreme court criticizes bench hunting says overturning previous ruling undermines ठीक अछि आ भितर मु किछि बेसी डेटा आननी बट जहा अछि मु कहि देबी काहे आई डिडंट गेट टाइम टू आई मीन पुट सम डेटा ठीक अछि आर्टिकल 141 you all be knowing about article 141 ठीक अछि आर्टिकल 141 कोन अछि है ना आर्टिकल 141 काहे एथरो ए टाइम रे Supreme Court has taken a stern opinion that they have criticized. I mean, there many of the benches are overturning the previous previous judgments. Suppose I had an. I mean, suppose if I am a criminal and if I am a criminal, I'm going for petition and gotte bench ना कि मतलब मना करतला बेल दवा पे गोटे बेंच मतलब मना कला बेल दवा पे मु सेम केस टा मु आउट बेंच को नहीं गली ठीक अछि एंड सी मतलब बेल दे देला ये मतलब बेल देलानी मतलब दिस इज ओवरटर्निंग इट्स प्रीवियस जजमेंट राइट आर्टिकल 141 रे प्रॉब्लम थला कि whatever the judgment is given by the Supreme Court that is full and final and that is applicable everywhere in the country ठीक अछि प्रॉब्लम है कि ए जो जजमेंट उडा डाइल्यूट हे जाउछि केमते डाइल्यूट हे जाउछि तमे अलगा बेंचेस को नहीं जाओ दे विल डाइल्यूट देलो लाइक दैट हमरो माने कोन डॉग्स रिहैब रे हेतला राइट डॉग्स रिहैबिलिटेशन कोन हेतला गोटे बेंच कहथिला कि ओके देयर इज अ डॉग्स रिहैबिलिटेशन now I mean we have to remove from the city right now we have to remove from the city and tanga out jaga थैतन करियार अछि ठीक अछि बट सेडा को नेकरी माने वाइडली क्रिटिसाइज हेतला से जजमेंट को नेकरी I mean animal right groups and various other activists they have criticized the judgment तापरे आउ गोटे बेंच सुप्रीम कोर्ट रे कोन कला से डॉग रिहैबिलिटेशन को इन सिटू कर देले है ना ओके कोड नवा दरकार नहीं तमे भितरे तांको डॉग स्टेरिलाइजेशन भी करो तांकर बर्थ कंट्रोल मेजर्स नियो एंड ताको इन सिटू भितर रखि दियो माने सिटी भितर रखो बट सिटी बाहर नवा दरकार नहीं सो एठी कोन ओवरटर्न गोटे हे जतला ठीक अछि ओवरटर्न हेतला आ गोटे बेल प्ले मु देखतली आई थिंक शेख अनिमुर रहमान वर्सेस वेस्ट बंगाल ना ता भितर भी से कोन कहतली कि से आगो गोटे बेंच को जायतला सी कहतली कि गोटे बेंच कहला कि ठीक अछि गोटे बेंच कहला कि हमु तुमको बेल देई परिबो ठीक अछि आ गोटे बेंच को नहीं जायतला है ना दे ऑब्जर्व दैट गोटे बेंच कहला कि ये बेंच कहला ये बेल दबोनी एंड दे ऑब्जर्व द जजमेंट दैट सी ऑलरेडी मना कर देछि जजमेंट को सी मना कर देछि हम बेल दबोनो तापर सी एठी कहला कि गोटे बेंच जदि मना कर देछि देन हाउ कैन वी गिव यू द बेल बुझि पाछो आइदर यू कम बाय रिव्यू पिटिशन है ना आइदर यू कैन कम बाय रिव्यू पिटिशन और हायर बेंच बुझि पाछो एट्टी समान कोन कहले आर्टिकल 141 नीड टू बी रेस्पेक्टेड है ना जदि वेरियस जज गोटे माने वेरियस बेंचेस गिविंग वेरियस जजमेंट ना इट्स कॉल फॉर द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 141 ठीक अछि आर्टिकल 141 ना डाइल्यूशन हे जो माने कंसिस्टेंट रहिबोनी सुप्रीम कोर्ट माने मान मर्यादा रहिबोनी बुझि पाछो इफ तीनटा सार अछि मु गोटे जजमेंट देले सुप्रीम कोर्ट रे इफ आई एम ए सुप्रीम कोर्ट जज सपोज केडी सर गोटे जज अछंती मु गोटे जजमेंट देले केडी सर अलगा जजमेंट देले सुजाता मैम अलगा जजमेंट देले तो एटी कोन डाइल्यूशन हे जाउची है ना सो एडा कोन होजी फिक्स रहउनी
सो इट माने सुप्रीम कोर्ट ऊपर निजर क्षमता ऊपर सवाल आ जाउची सो सेति में कहू आर्टिकल 141 को डायल्यूट करनी एंड जदि डायल्यूट करिवार अछि या जदि जजमेंट चेंज करिवार अछि यू कम बाय रिव्यू पिटिशन ठीक अछि रिव्यू पिटिशन आसो नले हायर बेंच को केस ट्रांसफर करो एटा थिला कि कहइबार थिला सेति में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्रिएट्स बेंच हंटिंग हैना बेंच हंटिंग says overturning previous ruling undermines article 144 एटा थिला ये मु तार किछि आनी नी because I was not getting time so मु आनी पलेनी मते काली रात्रि रे बनेबार थिला ठीक अछि I was outside for a while so this is Harari motamoti case you understood right article 141 case that wherever there is a top court mean apex court ruling mean supreme court ruling you can't dilute that है ना and that judgment is applicable everywhere in the country ठीक अछि ए जिनसोटा से कहथिले एंड आ गोटे कथा कैन यू टेल मी अबाउट रिव्यू पिटिशन व्हाट इज रिव्यू पिटिशन देखो देखो गोटे गोटे सिविल केसेस रे कोन हुए है ना जदि तुमको जजमेंट भल लागुनी देन यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यू पिटिशन ठीक अछि रिव्यू पिटिशन अछि ठीक अछि रिव्यू पिटिशन रे भी माने रिव्यू पिटिशन भी हुए बट बहुत कम केसेस जाए कि माने इवन रिव्यू पिटिशन में तुम जदि हारी गले ना बहुत मिनिमल चांसेस थाए कि तुम क्यूरेटिव पिटिशन को जीवो सुनी तब क्यूरेटिव पिटिशन सुनी तब है ना मु रिव्यू पिटिशन भी कहै तापर जदि क्रिमिनल केसेस हुए ना जदि क्रिमिनल केसेस हुए ना एटी कोन थाए रिव्यू पिटिशन भी थाए क्यूरेटिव पिटिशन थाए आ गोटे थाए मर्सी पिटिशन थाए जोटा कि प्रेसिडेंट दियंत राइट कैन यू टेल मी व्हाट इज रिव्यू पिटिशन है ना how the review petition functions you all be hearing about article 137 right article 137 रे देथबो right तुमको देखो एक्चुअली कोन है जितलो वन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जजमेंट दिए ना देन at least we can confirm that the judgment is very valid one supreme court माने 141 आर्टिकल 141 यूज करी जदि दे हैव गिवन द जजमेंट ना दैट जजमेंट इज वैलिड जदि तक ओवरटर्न करिवार अछि ना कम बाय द लीगल प्रोसेस कोन रिव्यू पिटिशन मारो एंड रिव्यू पिटिशन हला पूर्व कोन करिवे जो बेंच जजमेंट देथले ना दे विल हियर दैट केस वंस अगेन इन दैट चैम्बर असली कोर्ट रे नो दे विल हियर द गुडा टिके बुझी दो सब पिटिशन गुडा हम बुझी दो ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट रिव्यू पिटिशन ठीक अछि देखो रिव्यू पिटिशन कोन हो जानछ वंस तुम सपोज मु केस हारी गली ठीक अछि मु जदी केस टा हारी गली आई वांट टू रिव्यू इट वन सेकंड आई वांट टू रिव्यू इट ठीक अछि तो मु कोन गली सेम बेंच सपोज एडा बेंच रे तीन जण जज थिला ठीक अछि जज थिले ए माने मो जो केस टा थिला सपोज आई वांटेड ए बेल ठीक अछि आई वांटेड ए बेल से मते बेल देलेनी ठीक अछि बेल देलेनी मते कोन करिया पड़िबो within 30 days मते रिव्यू पिटिशन मारिया को पड़िबो मते रिव्यू पिटिशन मारिया पड़िबो एंड जेतलो मु रिव्यू पिटिशन मारिबो ना जो जजेस अछंती तांको चेंबर से माने से ए सेम तीनटा जजेस ना सेम तीनटा जजेस से बसिबे से चेंबर रे बसिबे एंड दे विल एनालाइज माय रिव्यू पिटिशन मोर जो पिटिशन मु जो आउटरेट फाइल करतले दे विल एनालाइज द रिव्यू पिटिशन एडी एनालाइज कोन करिवे what they will analyze that have they missed any significant application of law से माने लॉ यूज करी कि जो जजमेंट देथिले ता भीतर किछ रिव्यू हे परिबो कि या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को से माने अनदेखा करछन कि या से केस रे न्यू फैक्ट्स माने एमर्जेंस ऑफ न्यू फैक्ट्स बुझी परछो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बुझी परछो मुझे तो रिव्यू पिटिशन देब ना दैट द जजेस विल एनालाइज ऑल दिस थ्री केसेस किछि नुआ लॉ माने आमे लॉ रे एप्लीकेबिलिटी भूल करछु कि या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हमें फॉलो करेनु या किछि एमर्जेंस ऑफ न्यू फैक्ट्स है ना जदि न्यू फैक्ट्स आसी गले तो हमको कोन करिया पड़ो वी हैव टू ओवरटर्न राइट एटा तले से माने ए जिंस को से माने आगे कोन करिवे अप्लाई करिवे तापर जदि देखु से केस रे मजबूत अछि से जदि केस रे मजबूत अछि दे विल ट्रांसफर टू द कोर्ट देन कोर्ट रे फोनी सुनानी हबो बुझि पाछ कोर्ट रे फोनी से केस सुनानी हबो दैट इज कॉल्ड रिव्यू पिटिशन बुझि पाछ कोर्ट रे फोनी सुनानी हबो देन ठीक अछि कोर्ट जदि फोनी सुनानी हेले एंड स्टिल मते बेल मिललानी मते बेल मिललानी तापर कोन हबो जदि कोर्ट सुनानी हेला ता पर भी मते बेल मिललानी देन आई हैव टू गो फॉर ए क्यूरेटिव पिटिशन दिस इज द लास्ट रिजोर्ट क्यूरेटिव पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन जाएनी माने माने हार्डली एनीवन गोस ना वंस दिल्ली मेट्रो जाइथला क्यूरेटिव पिटिशन दे वोन द केस बट हुएनी
curative petition was it was an emergence from कौन रूपक हुरा case है ना. Just remember this. Curative petition is an innovation है ना. It is an innovation. But माने एडा अगुन नथिला. But एडा actually emergence from रूपक अशोक हुरा case. अशोक versus रूपक हुरा case है ना. हुरा case. ये जो मन रखियो अशोक हुरा case. अशोक हुरा केस रे कोन थिला क्यूरेटिव पिटिशन रो इमर्जेंस आस्तला माने दैट इज द लास्ट रिसोर्ट मते जदी बेल मिलला नहीं रिव्यू पिटिशन रे मोटे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करि परिबे सेम जिंस साउथ रे देखिबे है ना लॉ मिस जाय छी कि नेशनल जस्टिस मिस जाय छी कि या किछि नुवा फैक्ट्स इवॉल्व हो जाय छी तो ता भीतर जदी हैला नहीं देन एवरीथिंग इज डिसमिस्ड बुझि पारछो आई होप यू आर गेटिंग राइट माने कोन थला आगे थला रिव्यू पिटिशन ठीक है रिव्यू पिटिशन कोन हो द जजेस विल आ गोटे एग्जांपल दो कोन हेतला जा मन अछि एक्चुअली तम मन अछि 498 ए एटा कोन दिस इज द फेमस सेक्शन आईपीसी 498 ए व्हाट इज दिस सेक्शन आईपीसी 498 ए के तो जानि तो झियोपला तो जानि तो बेटा राइट कोन एटा आर रिव्यू पिटिशन हेतला म कोच इफ एनीबॉडी नोस दिस सेक्शन 498 ए कौन थिला एटा it is related to dowry harassment case है ना dowry harassment case एटा ठीक अछि गोटे जजमेंट आस्तला देयर वाज अ जजमेंट दैट if माने गोटे सुप्रीम कोर्ट गोटे जजमेंट देतला if anybody applying this section and जदि तमे if you have done a case against your husband or mother-in-law using this section ना actually कौन हुए immediate arrest हुए ठीक अछि actual case रे जो प्रावधान अछि it calls for immediate arrest ठीक अछि but problem है कि this has been the most misused section of the law एटा बहुत misuse हेतला कहीं एमिति innocent husbands ओटा arrest होंती innocent husband हेगला innocent mother in law एमिति बहुत सारा केस अछि जो तरह के innocent husband arrest हो जानती कहीं आईपीसी 498 रे कोन कहूचे जदि तमे 498 मानलो it is mandatory that you will I mean the husband should be arrested ठीक है तो एठी सुप्रीम कोर्ट थरे जजमेंट कोन देतला ए जो इमीडिएट अरेस्ट को ना से मना कर देला थरे जजमेंट देतला कि सेक्शन 498 रे कोन हतला इमीडिएट अरेस्ट को माने से माने कहले कि इफ यू आर यूजिंग 498 ए देन यू माने सुप्रीम कोर्ट जज कहले कि इमीडिएट अरेस्ट हे परिबो बुझि पार एटा थरे जजमेंट देतला देन ऑल ओवर द कंट्री ऑल द फेमिनिस्ट दे फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन हल्ला गुल्ला कर देले रिव्यू पिटिशन देन सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड देयर प्रीवियस जजमेंट कहीं ओके कहीं जदि तमे एडा हेई परिबो नि ता माने कोन यू आर डाइल्यूटिंग द लॉ एंड इफ यू आर डाइल्यूटिंग द लॉ देन कोन तार आर मर्यादा कोन रहबो रिव्यू पिटिशन हल्ला देन व्हाट हैपेंड सो 498 ए रा पावर रीइंस्टेट हे गला and court said that the power to change the law lies in front of parliament in-laws family not suddenly arrested okay I mean actually कौन है कि पति बहुत arrested है ना पति माने इट्स अ चेन इफेक्ट पति अरेस्ट I mean family in-laws भी arrest हो जाते significant time रे but पति will be going to the hell because of 498 तो एट्टे कौन लगी तब रिव्यू पिटिशन पड़ला देन सुप्रीम कोर्ट reinstated the section 498 हाँ immediate arrest हे परिबो and they said that the power to change 498A lies with the parliament जो change करि परिबो then it's good otherwise no problem right आ गोटे केस थला कि जो जिनस कहि परिबे you heard about famous शबरीमला केस है ना शबरीमला जानि सब राइट एट्टे कोन हेतला शबरीमला केस रे कोन हेतला I mean it led to the prohibition of woman entry है ना it led to the prohibition of woman entry at a certain age group from 10 to 50 years है ना कहीं जो DT अय्यप्पा अछंती I mean he is a practicing man माने man in the sense obviously तार कोन होतला कोन कोन जे like Modi and Yogi ठीक है he is a yogi so woman trade जाई परिबनी even जेतरो मु जेतल थिली केरला रे थिली so I used to मु when I was 11 years old मु जाइतला अय्यप्पा जाइतली ठीक अछि when I went to अय्यप्पा and my friend माने मेरा मो जो फादर हम ब्रह्मचारी मो जो फादर अछंती आ तांकर जो कलीग अछंती
तांकर colleague रो daughter थिले, she was around 10 years old, I was also 10 years old because we studied in same college. आमु कहले कि we should go by this year कहेंगे when the daughter will turn next 11 year it like she will getting the menstrual cycle. So मु जानि पलिनी what is this rule सेतोले I mean हमको सेतो your माने जाउ जदि अय्यप्पा टेंपल जाउछ ना तो हम भाबि देखो it's like the Vaishno Devi of Kerala. वैष्णो देवी गला तो बहुत सारा स्टेप्स छोड़िया पड़े अय्यप्पा टेंपल रे बहुत सारा स्टेप्स छोड़िया पड़े तो हमको पुणी तमे हाँ प्रेसिडेंट कैन विजिट ना शी इज अबव 60 शी कैन विजिट राइट तो सेठी कोन कि आफ्टर अटेनिंग द मेनोपॉज देन यू कैन विजिट जेतो तमरो मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होईची देन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल टू मेनोपॉज है ना आ भितरे तमे जाई परिबो नै आफ्टर अटेनिंग मेनोपॉज देन यू कैन विजिट अय्यप्पा टेंपल है ना बुझी पार ए जिनस आमे जाइतल मु देख मु सेतल पछली व्हाई दिस इज हैपनिंग है ना तो मु परे जाने बोले ओके दिस इज द अय्यप्पा डिटी वाज अ ब्रह्मचारी सो इट इज नॉट अलाउड बोले ठीक अछि एंड शी आल्सो टोल्ड दैट आई विल बी गोइंग आफ्टर 40 इयर्स ए जिनस से कहथल तो मु कहल ठीक अछि देन जेतल 2019 रे एक केस आसिला माने some feminists urge that why woman is prohibited in going to the temple, isn't it hampering their fundamental rights, right? तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहला से कहला कि या वुमन कैन गो इन द टेंपल as it hampers the fundamental rights. So तमे ban करि परिबोनी, you can't ban the entry of woman in the temple because it is against the fundamental rights, है ना? आ पर रिव्यू पिटिशन पड़थिला कि why you are playing with your faith, है ना? Why you are playing with your faith? Article 15 hamper होचे. Article 15 hamper होची, but I mean you need to know ना जदि सेमिति Article 15 hamper होची, so Muslim women are not allowed to visit mosque. Why? Muslim women are not allowed to visit mosque. सेठी तो Article 15 कहीं hamper होनी. Just imagine. बुझे एते फेमिनिज्म अछंती माने हिंदुइज्म रे ओनली हार्डली 2 to 3 टेंपल रे एम रेस्ट्रिक्शन अछि यू आर अलाउड टू गो 99.99% ऑफ टेंपल ओनली हार्डली 2 आउट अछि शनि सिग्नदा टेंपल महाराष्ट्र अछि ओनली 2 to 3 टेंपल आउट एमते टेंपल भी अछंती वी मेन आर नॉट अलाउड एमते टेंपल भी अछि बुझी पारो इट इज आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट दैट एक्सेप्शन रे जिवो देखो मुस्लिम वुमेन आर नॉट अलाउड इन द मॉस्क and सेड़ा केस हला केस कोड हला अय्यप्पा टेंपल ऊपर केस हला जस्ट इमेजिन आई मीन हाउ द पीपल आर वर्किंग इन आवर कंट्री है ना तो एठी कोन हला जेतो रिव्यू पिटिशन पडिबार थिला सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रिव्यू पिटिशन कोन हला कि इज योर आई मीन सेट दीटा ईयर डिबेट हला डिबेट कोन हला फेथ वर्सेस फंडामेंटल राइट रो डिबेट थिला ओके इज आई मीन जो फेथ अछि अय्यप्पा रो द एंट्री ऑफ बैन is it an essential religious practices है ना essential religious practices and एठी भी fundamental rights ना debate हेतला है ना is I mean not allowing women into that temple is a part of essential religious practices एटा क्वेश्चन थिला कि but last को सुप्रीम कोर्ट मना कला no it is not a part of essential religious practices हम पुरी रे भी क्रिश्चियंस अलाउ नु है हम पुरी रे हां सेठी फेथ अछि ना if Christians are there I mean तांकर चर्च अछि they can go I mean देखो गोटे जिंस थाए ना तमे जदि फेथ को मानुचो ठीक से तमे ठीक से जदि फेथ को मानु देन यू शुड गो आ गोटे कथा कहबी ओके सपोज मो एग्जांपल नै छियो I don't want to offend anyone suppose I take my example I want to marry another girl I want to marry another girl मो ऑलरेडी मैरिड अछि ठीक अछि तो मु कोन धर्म चेंज कर दे मुस्लिम सेट अलाउड अछि तो दिस इज एक्चुअली नॉट अलाउड माने सुप्रीम कोर्ट भी कहै छी यदि तुम आस्था नै यू शुड नॉट डू दैट इज नॉट इवन अलाउड बुझी पाछो गोटे था आस्था भी रहबा कथा आस्था नै तुम जीवो तुम टेंपल रे जीवो हाउ दैट आई मीन इट कॉल्स फॉर माने सेडा भी कहंती ना इज इट राइट तुम आस्था नहीं तुम जाऊच गोटे माने जोटा कि गोटे पूरा प्रैक्टिसेस को तुम हैम्पर करूछ हार्डली 2 to 3 टेंपल्स रे प्रॉब्लम अछि आ किछि प्रॉब्लम नो एटा गोटे प्रैक्टिस था तो परे सुप्रीम कोर्ट को मना कला नो आई मीन द टेंपल बैन शुड नॉट बी देयर वुमन शुड हैव एन एंट्री तापरे even the Kerala woman है ना Kerala woman they were against the ruling माने Kerala woman भी चाहना कि हमें जीवो बोली they will wait है ना they will wait
after attaining menopause they will go. Kerala रे जो पिला एमती कहउथले, I mean I have lots of friends there, बुझि पारछो से माने से जिंस कहउथले, right? So review petition can be filed by anyone. जदि तुम जजमेंट भल लागुनी you can file the review petition. ठीक अछि, एटा थिला रिव्यू पिटिशन ऊपर थिला है ना. तो एटा गोटे क्वेश्चंस अछि, तमे ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन है ना. कोन क्वेश्चन अछि? विथ रेफरेंस टू रिव्यू पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट. बढ़िया क्वेश्चन टा. With reference to review petitions in the Supreme Court, consider the following statements. The Constitution gives the power to Supreme Court to review its own judgment or orders. ठीक है. The Constitution gives the power to Supreme Court to review its own judgments or orders. Only parties to a case can seek a review of a judgment or order. Only parties to a case can seek a review of a judgment or order. A review petition has to be filed within 30 days of the date of judgment or order. How many of the statements are true? The Constitution gives the power to Supreme Court to review its own judgment. Only 2 and 3. Okay. Only parties to a case. Okay. Only parties to a case can seek a review of a judgment. तो मैं कहूँ कि माने जो पार्टी केस हारी जाइची से ही खाली रिव्यू पिटिशन देई परिबो, राइट? ई जिंस तो मैं कहूँ से ही खाली रिव्यू 1 and 3 is right. के कहले हां, she is saying 1 and 3 right, Priyanka is saying 2 and 3 is right. Yes sir. Okay, Constitution gives the power to Supreme Court. एटा कोडा, एटा को आर्टिकल 137, right? Article 137 है ना, Article 137. A review petition has to be filed within 30 days. एटा मु एबे कहली 30 days review petition within 30 days has to be filed. एटा एक्चुअली कोन सुप्रीम कोर्ट लॉ बुक रे अछि है ना. देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट तांकर जो रूल्स एंड रेगुलेशन रे लिखा अछि, review petition will be immediately filed within 30 days. आ गुड only parties to a case can seek a review of a judgment. मु तुमके एबे कहू नथले कि सेक्शन 498A रे कोन लॉ रे जतला डायल्यूशन हला इमीडिएट अरेस्ट हे परिबने. देश सारा रे रिव्यू पिटिशन आस्तला, ऑल ओवर इंडिया रे रिव्यू पिटिशन आस्तला, ताको क्लब करा गला, बुझि पाछो. सो रिव्यू पिटिशन इज नॉट I mean it is not restricted to the only parties. It is not restricted to the only party. Anybody can file a plea in the court and do a review petition. पर तांकर जो कोर्ट, तांकर जो लिटिगेंट रोड़ा अछि सेटा मर्ज हेकरी कोर्ट सुनानी करे, बुझि पारछो. ओनली पार्टीज, दिस इज रॉन्ग, राइट? के कहतले कि आई थिंक या श्री वाज राइट 1 and 3. तो अरे आ भीतर कोन हबो? ओनली 2 इज राइट. ठीक अछि, ओनली 2 इज राइट. आई होप यू गॉट इट. हां, बुझि पारछो तो? हां, बुझि पारे न बुझि पाले मते कहबो, आउथरे बुझे जेबे. ठीक अछि. मु आ भीतर किछि आनी नी, माने किछि डॉक्यूमेंट मते किछि टाइम मिललानी. सो आई थॉट ऑफ सेइंग माने मोर जहा मन अछि मु कहि देली. तो आर्टिकल 141 टा पढिबो हला, तापर 137 पढिबो हला. ए दिटा आर्टिकल मन रख देबो. माइट बी तमरो एसओ, राइट, या तमरो पी और भी क्वेश्चन आस पारे आगु को, या तमरो सीजीएल रे भी ए क्वेश्चन टा आसी जिवो. किंतु मते लागुची तर ओपी ओएस रे क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसी जिवो एथरो. ठीक अछि. सो मन रखो, देखो जहां भी पढौची आउथरे जेतो मो वीडियो देखिबो ना आउथरे, यदि इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस ना 1.5x स्पीड रे देखिबो तको. ओके, सी द वीडियोस इन 1.5x फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस. एंड कंगल तादर टाइम वेस्ट हो. मु जेतल मते लागुच, मते जेतल लागे ना मते मो वीडियो टा रिव्यू करे मु ताको 2x स्पीड रे देखे, कोन भूल अछि. So if you watch my video on 1.5x speed, then that will be good. ठीक अछि. तो एडा हे गेला हमर एबे रिसेंटली है ना, एबे रिसेंटली आरबीआई had done a rate cut. आरबीआई had done a rate cut. बुझि पाछो कोन रेट करछन है ना. एमपीसी मीटिंग highlights RBI rate cut by 25 basis point to 5.25%. EMI is to come down. जदि तुम फ्लोटिंग इंटरेस्ट अछि तुम EMI भी कमी जिवो. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा dismisses concerns of on rupee says comfortable on external sector माने फॉरेक्स रिजर्व. देखो एबे रुपी डेप्रिशिएट करछु ना, एडा आरबीआई कहिबार काई कारण हला कि आरबीआई इज सेइंग दैट रुपी इज डेप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ टैरिफ, मेनली टैरिफ, आ तार किछि ये नै, बुझि परछो. रुपी इज डेप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर है ना. एंड सी कहउचंदी आर रुपी विल बाउंस बैक.
जेतळे सब आई मीन वंस ट्रेड डील हे जिवो रुपी विल बाउंस बैक ठीक अछि एटा काई दबार रीजन कोन आछो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी हमर रेपो रेट कट करछ है ना रेपो रेट कट करछ आ गोटे कथा जदि हमें इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेपो रेट है ना माने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी can you tell me when this monetary policy committee was established केबे आस्तला ए कमिटी हाँ गुड मॉर्निंग गायत्री गुड मॉर्निंग थैंक यू देखिए देबो 2016 लिखा है 2016 मिनिमम नंबर ऑफ कोरम माने मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग केते तंकर थाए ईयरली मिनिमम से माने केथर मीट करिवे आई थिंक 4 टाइम्स हला 4 टाइम्स से माने मीट करिवे एंड अभी तो केतरा मेंबर्स थांदे एटा सब ना एटा सब फैक्चुअल डाटा 4 टाइम्स मीट करिवे मैम एटा सब मन रखियो ए जो फैक्चुअल डाटा ना हमें बेले छाड़ी दो है ना कौन के आरबीआई रु 3टा नॉमिनी आरबीआई रु 3टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रु 3टा हला एंड कास्टिंग वोट कार आरबीआई ठीक अछि कास्टिंग हला आरबीआई गवर्नर कास्टिंग वोट अछि ठीक अछि एमपीसी मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स a year प्लीज रिमेंबर दिस इज क्वार्टरली ठीक अछि एमपीसी कैन बी मोर फ्रीक्वेंट इफ नीडेड एटा बुझी पाछो कैन बी फ्रीक्वेंट इफ नीडेड लिखा अछि मिनिमम 4 टाइम्स a year काहे कि फ्रीक्वेंट हेछि है ना देख एटा 6 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स है ना ओके ओके एमपीसी मेंबर 9 कोच ना हां ठीक अछि मिनिमम तो 6 रहबा कथा है ना वोटिंग डिसीजंस आर मेड बाय just check it okay 6 members I think it is 6 members not 9 members okay it okay actually it's 6 members है ना 6 members है भूल लिखा है 3 from RBI 3 from 3 for government है ना 6 members रहबा कथा ठीक अछि 6 members एटा बोले भूल दिए अछि तबरे voting decisions are made by majority vote transfer RBI publishes monetary policy report and minutes after the meeting ठीक अछि एटा बे recently अछि 3 RBI 3 government ठीक अछि एथर देखो केते थोर जे माने मीटिंग करछंती है ना फेब्रुअरी करले रेपो रेट कट बाय 6.25 पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट कट कर देले अप्रैल रे केते कट करले 6% जून रे कट करले औरी केते 50 बेसिस पॉइंट कट करले तापरे एठी रेपो रेट अनचेंज थिला अगस्त मास रे तापरे अक्टोबर मास रे अनचेंज थिला दिवाली थिला बहुत पैसा देले सेतोळे मार्केट डिसेंबर रे इट्स अ रेकॉर्ड माने तमे एक्चुअली तो मन रखो 2025 रे एमपीसी 6 टाइम मीट करछंदी प्लीज रिमेंबर दिस एटा तुमको रिमेंबर करिया पड़ियो यदि पचार दबो हाउ मेनी टाइम्स एमपीसी हैज हैड एन मीटिंग है ना केथर से माने मीट करछंदी एमपीसी इन 2025 नंबर पचार ओपीसी नंबर पचार दिए सो इट इज 6 टाइम्स ठीक अछि so MPC met 6 times in 2025 exceeding the minimum requirement so please remember this 6 times they have met in 2025 it's a record actually सेमिति के मीट करन देनी ओके तो एडा थला ये है ना एथर आरबीआई कोन अनाउंस करछि सेडा सुनो है ना आरबीआई कोन करछि अनाउंस करछि रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.25 तो एबे अछि 5.25 वाला रेपो रेट इज 5. व्हाट इज रेपो रेट repo why this is happening repo rate is what is repo rate the banks borrow money from the RBI with a certain interest which is repo rate ठीक अछि and तारा lending के दिन पाई थाए it can be 1 7 and 28 days थाए ठीक अछि एटा भी मन रखिबो बुझि परछो and तापर से हिसाब रे एबे जदी 5.25 इंटरेस्ट रेट रे पड़े 100 टाका नैथबोदी एटा सिंपल इंटरेस्ट रे कैलकुलेशन होय 100 टाका नैथबोदी 5.25 इंटरेस्ट रे से फेरेबो विद इन 1 7 और 28 व्हिच एवर मे बी द माने से जोथर नै छते रेपो रेट आ गोटे थिला कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट I think banks used to park funds at RBI है ना बैंक के भी लोन दबोनी बैंक will use to park बैंक give interest to RBI हां सेटा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हला अलगा दबो किंतु आटू कम दे परिबो हला केते कम दे परिबो इट कैन बी 5% या 4.75% रिवर्स रेपो रेट काहे कि RBI आउटर इंटरेस्ट दबो ठीक अछि
ओके सेटा रिवर्स रेपो रेट आ गोटे एसडीएफ एसडीएफ कौन व्हाट इज एसडीएफ एसडीएफ कौन सेम ना रेपो रेट जहाँ भी एसडीएफ से आता ना देखो एटा कौन था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एटा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज है ना एटा विदाउट कोलैटरल बैंक यूज टू पार्क एक्सेस सरप्लस विथ आरबीआई ठीक अच्छे बट आ भितर भी केते इंटरेस्ट बहुत कम मिलिबो यदि बैंक पाखरे बहुत पैसा हेगला then without collateral they will park their funds within with RBI एटा आको कोन एसडीएफ एटा बोले 2022 रास्तला ठीक अछि है ना एंड आर इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट टू कम ठीक अछि आ गुड हैला कि एमएसएफ व्हाट इज एमएसएफ एटा एटा सब कोन प्योर जिंस ओडा सब I hope you it's a concept तुम जानि बोधे राइट तमे please watch economic classes है ना it's not possible for me to explain everything in one classes but do अर्पिता मैम class attend करो तो she will explain you everything है ना एटा एमएसए वाला की emergency borrowing है ना emergency borrowing for one night emergency borrowing for one night ठीक अछि एटा by bank ठीक अछि तो एटा ए सब जिंस तमे जानिया कथा है ना ओके ठीक अछि आई विल कम टू द टॉपिक ना एटी कोन करछि माने आरबीआई कोन कहिछि द आरबीआई लोवर्ड द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट 5.5 एटी कोन कहिछि से माने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करूछन्ती देखो एक्चुअली एथरो गोटे नुवा टर्म आछि यू शुड रिमेंबर मु जो टर्म टा कहबी यू शुड रिमेंबर माइट बी दे कैन आस्क ए क्वेश्चन सेट थी भाई देखो बाई मंथली जो रिव्यू मीटिंग सब बेले हुए बट आई डोंट फोकस इन रिव्यू मीटिंग बट एथरो मु फोकस काई करछि ता पे कहबी हला एथर कौन कह ओपन मार्केट ऑपरेशन हम गवर्नमेंट बॉन्ड विल बी गवर्नमेंट बॉन्ड परचेसेस आरबीआई प्लान्स टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ 1 trillion 11.1 billion in December. This injects liquidity into the banking and bond market. बुझे पारछो so RBI is planning to buy bonds by injecting liquidity in the market. RBI चाहूची कि मार्केट रे पैसा आसो ठीक अछि मार्केट रे पैसा काहे आसो सेरा मु कहबी ठीक अछि आ उडले फॉरेक्स एक्सचेंज स्वैप माने RBI announced $5 billion rupee swap. This is aimed at to support forex liquidity. तबरे बुझी पारछो एबे RBI is going to buy around $5 billion. देखो $5 billion from Federal Reserve. बुझी पारछो RBI is going to buy माने I mean they are going to swap $5 billion from forex reserve. बंधा कोन पड़िबो इक्विवेलेंट टू रुपीस है ना फेडरल रिजर्व को रुपी किछि दरकार नहीं बट किछि तो बंधा पड़िबो ना तो सी कौन करे $5 billion एबे फेडरल रिजर्व रो आरबीआई बाणियो सो दैट रुपी कैन बी स्टेबलाइज्ड जदि तुम डॉलर आनले रुपी विल बी स्टेबलाइज्ड ठीक अछि $5 billion स्वैप हबो देखो फेडरल बैंक भी चाहिबो ना रुपी टिके स्टेबलाइज हो कहिंले अमेरिका रो बहुत सारा जो माने तांकर भी जो सिटीजन्स अछि ना से माने भी इंडिया रे इन्वेस्ट करछन्ती एंड दे विल नेवर वांट दैट हमर रुपी रो भी बहुत डेप्रिसिएशन हो जो फेडरल बैंक जो से माने भी चाहिबे कि रुपी रो माने डेप्रिसिएशन हो कहीं तांकर भी इंटरेस्ट अछि ना से माने भी चाहिना ओटा बैलेंस ऑर्डर थाओ ना इधर रुपी बेसी डेप्रिशिएट करो ना डॉलर बेसी डेप्रिशिएट करो गोटे बैलेंस हो कहीं मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट आर देयर बुझी पार अमेरिका रे बहुत सारे सिटीजन हमर माने रुपी लोकेशन माने हमर इन्वेस्ट करछन सपोज रुपी क्रैश हेगला से भी क्रैश हे जेबे बुझी पार सेते पई एडा सब कोन करेंसी माने डॉलर स्वैप रे एग्रीमेंट होय हला कोन आइ तो कोन स्टेबलाइज लास्ट क्लास रे पढी थली स्टेबलाइजिंग द रुपी एंश्योरिंग देयर इज देखो वंस आरबीआई ए पैसाटा जदि से आनिले ना कोन डॉलर जदि आनिला दे विल सेंड इट टू बैंक्स बैंक को पठे देबे बुझी पारछो तो वंस तमे बैंक्स को डॉलर पठेले बुझी पार वंस यू सेंड द डॉलर टू द बैंक्स ना तो रुपी जेतो देखो डॉलर कम अछि
डॉलर तुम बढ़े देलो मार्केट रे बढ़े देलो सेम जिंस डॉलर एबे कम अच्छे डॉलर तुम बढ़े देलो तो कौन माने रुपी टी एप्रिसिएशन हम रुपी विल बी एप्रिशिएटेड रुपी रो वैल्यू टी बढ़िबो से जिंसटा से कहूँ है ना से यही सब एग्रीमेंट हम आपको ठीक अच्छे $5 बिलियन स्वापिंग एग्रीमेंट हम क्या संगे फेडरल बैंक संगे why forex swap helps repo rate transaction in an forex swap RBI injects rupee liquidity into the banking system बुझी पारछ more rupee liquidity banks have more cash lending free falls faster repo rate cut transmit better देखो जदी repo rate तमे जदी अनाउंस करछ ना तार तो किछि माने फायदा भी तो होबा कथा ना फायदा भी तो होबा कथा ना बुझी पारछ एंड जदी आरबीआई जदी डॉलर जदी इंसर्ट कर दोची डॉलर इंसर्ट माने कोन माने रुपी रो डिमांड बढ़िबो बुझी पारछ वंस रुपी रो डिमांड हमर सिस्टम रे बढ़िले माने कोन रेपो रेट रो भी बेनिफिट नहीं परिबे ना तमरे तमर सिस्टम रे पैसा नहीं तमर सिस्टम रे पैसा नहीं आ तुम रेपो रेट रे बेनिफिट केमि दबो तमे लोन तमर रेपो रेट जो कट है तार बेनिफिट केमि पास करबो पास करबा पई पैसा तो दरकार ना से पैसाटा कोड आसीबो आरबीआई दबो कोड डॉलर आनी से डॉलर जो कन्वर्ट हबो इंडियन मार्केट रे रुपी फ्लडिंग हबो बुझी पारछ देन कोन हबो से रुपीटा लोन हिसाब रे समस्त जीवो ए जिनसटा से कहूँ दैट इज व्हाई द डॉक्यूमेंट सेज लोअर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंप्रूव ट्रांसमिशन माने ट्रांसमिशन ऑफ रेपो कट्स माने डॉलर आसिला डॉलर को हमें मार्केट रे फ्लड करू माने ऑब्वियसली इंडियन मार्केट रे रुपीस आसीबो त माने को ट्रांसमिशन ऑफ रेपो कट्स माने जो रेपो कट्स हेतला एबे कोन रुपीस इंडियन मार्केट को जीवो सो दैट आई मीन पीपल कैन गेट बेनिफिट्स तबरे मैनेज रुपी वोलेटिलिटी ए जिनसटा से कहूँ ओके तबरे why did RBI cut the repo rate sharp fall in inflation देखो एठी कोन हेची prices were falling quickly माने एबे कोन होची माने एटाला डिसइन्फ्लेशन चलची एटा डिसइन्फ्लेशन एबे चलची हला ओके RBI called it is rapid disinflation ठीक अछि एटा मन रखिबो it is rapid disinflation काहे कि meaning inflation is coming down faster than expected माने सपोज 5% थबो 4% हिजो 3% हिजो 2% हिजो एटा हला रैपिड डिसइन्फ्लेशन ठीक अछि when inflation falls fast RBI gets freedom to cut repo rate because low inflation means economy is stable देखो लो इन्फ्लेशन माने कोन लो इन्फ्लेशन माने कोन माने मार्केट रे पैसा नाही सेति पय रेपो रेट को तमे जदी कमेले तले कोन हबो मार्केट रे बहुत पैसा बढ़ी बुझी पाछो जदी तमे रेपो रेट कमे देलो माने माने बैंक आरबीआई को कम इंटरेस्ट दबो सेति पय बैंक लोकन को लोन बेसी दबो माने रुपी रो सप्लाई बढ़ी जीवो रुपी रो सप्लाई मार्केट रे बढ़ी जीवो ऑलरेडी डिसइन्फ्लेशन चलची हमकु एटलीस्ट 2 to 3% इन्फ्लेशन तो आने पड़िबो नले जॉब कट जीवो सब बडे बुझी पाछो नले अरे मार्केट जदी पैसा नथबो आलू हो 10 टका हो 8 टका हो पर जदी मार्केट रे पैसा नथबो किनिबो की आ जॉब्स आसीबो गुड बुझी पारछो so when inflation falls fast RBI gets freedom to cut repo rate because low inflation means economy is stable जदी हाई इन्फ्लेशन थबो जदी हाई इन्फ्लेशन मार्केट रे पैसा जदी भर्ती हेतबो कोन हो इन्फ्लेशन हे जिवो सेते पय कोन रेपो रेट बढ़े देबो RBI रेपो रेट बढ़े देबो माने कोन बैंक्स टू हाई चार्ज करबो से जिंसटा से कहूची एबे जेहेतु डिसइन्फ्लेशन होची से रेपो रेट कमे देला तो no overheating rate cuts will not fuel inflation too much ए जिंसटा अछि एबे एक्चुअली कोन हि चेंज एटा देखो strong growth momentum India's economy was growing strongly 8.2% GDP this is high growth and low inflation माने एटा केबे हुए नि जदी ग्रोथ हाई हुए ना इन्फ्लेशन जनरली जदी ग्रोथ हाई हुए इन्फ्लेशन बेसी हुए जदी हाई ग्रोथ हेले इन्फ्लेशन बेसी हुए एबे कोन हिची ग्रोथ हाई हे जायछि किंतु इन्फ्लेशन लो हो जायछि बुझी पर इन्फ्लेशन लो हो जायछि दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड गोल्डीलॉक पीरियड एटा तमर परीक्षा आगु पचारिबो दिस इज कॉल्ड गोल्डीलॉक पीरियड ठीक अछि गोल्डीलॉक पीरियड प्लीज रिमेंबर एटा कोन अछि एटा लागि स्टेबल है ना स्टेबल माने हाई ग्रोथ प्लस लो इन्फ्लेशन एक्चुअली कोन होता जेतले एक्चुअल होबा कथा हाई ग्रोथ हेले ना इन्फ्लेशन बढ़ी जाय जनरल ट्रेंड रे हाई ग्रोथ हेले इन्फ्लेशन बढ़ी जाय प्रॉब्लम है कि एटी हाई ग्रोथ होउची किंतु इन्फ्लेशन लो हो जाउची आगु कहबी केते अछि एबे ना बिकॉज़ द इकोनॉमी इज जस्ट राइट माने नॉट टू हॉट हाई इन्फ्लेशन नाही नॉट टू कोल्ड एते माने ग्रोथ एते नाही बुझी परछो माने
एट कौन देछि हां ए जिंसटा कोइ कोड वाला हाई ग्रोथ प्लस लो जस्ट रिमेंबर दिस हाई ग्रोथ प्लस लो इन्फ्लेशन ग्रोथ भलो अछि किंतु इन्फ्लेशन कम अछि हला तो एटा हला एटा मानछि एटा कोड इन्वेस्ट मानछि आरबीआई जो प्रीवियस प्रेडिक्शन करतला है ना फाइनेंशियल 26 पई 6.8 थिला कोन एटा जीडीपी 7.3% देछि ठीक अछि क्वार्टर 3 ऑफ एटा थिला क्वार्टर नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 3 रे केते हो 7% किंतु ऑलरेडी देछि प्रीवियस देछि देखो 8 कोन जीडीपी टिके बढ़ुछि बुझि पाछो कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट आरबीआई कहउछि जीडीपी बढ़िबो ठीक अछि जीडीपी बढ़िबो हला प्रीवियस असेसमेंट आगु जीडीपी बढ़िबार अछि किंतु एटी सीपीआई एस्टिमेट देखो हमर कोन एटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माने रिटेल इन्फ्लेशन कथा कोन कहउछि आरबीआई एबे अछि केते 2% अछि 2.6 हबा कथा बुझि पाछो एक्चुअली माने गवर्नमेंट चाहउछि 2 to 6% भीतर रहबा कथा कोडा सीपीआई इन्फ्लेशन किंतु एबे अछि 2% आरबीआई कहला 2.6 सो बुझि पाछो बहुत कम अछि इन्फ्लेशन इज वेरी लेस 2% अछि क्वार्टर 3 रे केतो 0.6 हेई पारे हैला माने क्वार्टर 3 बुझी पारछो एडाला 25-26 एटा 25-26 माने एबे अछि इन्फ्लेशन 0.6 अछि एबे इन्फ्लेशन माने आरबीआई प्रेडिक्ट करछे 0.6% अछि माने क्वार्टर 3 बुझी पारछो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर हैला क्वार्टर 3 बुझी पारछो 2025-26 माने एडा हला कि एडा हला क्वार्टर 3 माने 2025-26 बुझी पारछो क्वार्टर 3 एबे हमरो करंट एस्टिमेटेड 0.6 इन्फ्लेशन अछि एबे वी हैव ओनली 0.6% इन्फ्लेशन बुझी पारछो ओनली 0.6% इन्फ्लेशन अछि माने बुझी पारछो एबे हाई ग्रोथ भी अछि इन्फ्लेशन कम अछि ए जिंसटा से कहउछि हाई ग्रोथ हाई अछि कोन ग्रोथ अछि 8.2% अछि इन्फ्लेशन केते 0.6% आकु कोनती कोन गोल्डीलॉक पीरियड दिस इज कॉल्ड गोल्डीलॉक पीरियड बुझी पारछो इन्फ्लेशन देखो बहुत कम आगुर केतल थला कोरोना टाइम रे केतला 5-6-7% ही जेतला इन्फ्लेशन माने सीपीआई जो एस्टिमेट करतला एबे अछि 0.6% so that is why this is very important काहे तमरो हैला कि एडा गोल्डीलॉक पीरियड आगु कोन अछि पचारिबे हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन एक्चुअली हबा हाई ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन हबा ए जिंसटा से कहउछि तापरे इंपैक्ट ऑन बोरिंग लोअर रेपो रेट रिड्यूसेस बैंक कॉस्ट ना लोअर रेपो रेट रिड्यूसेस बैंक ग्रेजुअल रिडक्शन कोन तमर होम लोन सस्ता हे जिवो ऑटो लोन सस्ता हे जिवो बिजनेस क्रेडिट रेट सस्ता हे जिवो माने रेपो रेट कट हेले माने एडला एडवांटेजेस बुझि पाछो माने जदि तुम फ्लोटिंग नै थबो देन ईएमआई रिड्यूस हबो जदि तुम फ्लोटिंग नै थबो ईएमआई रिड्यूस हबो ठीक अछि फ्लोटिंग इंटरेस्ट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट कोन बॉन्ड यील्ड टेंड टू फॉल बिकॉज़ देखो एटी कोन रेपो रेट कट हेछि माने बॉन्ड जो बॉन्ड यील्ड अछि बॉन्ड सेटा भी फॉल हे जिवो काई कहला देखो बॉन्ड यील्ड टेंड टू फॉल बिकॉज़ ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑफ बॉन्ड यील्ड माने कोन हेछो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड माने कोन तमे बॉन्ड नैचो केते तमे बॉन्ड नैचो 100 टाका बॉन्ड नैचो राइट 100 टाका बॉन्ड नैचो तमे कहजो कि 10% तमे 10% दबो माने यू विल गिव 110 बॉन्ड यील्ड माने यील्ड 10 रुपीस रे यील्ड हला ठीक अछि तमे रेपो रेट अनाउंस करलो कि 7% हबो एग्जांपल दो 7% हबो 7% हबो तापरे एठी कोन हबो बॉन्ड यील्ड कमी जिवो काई कमी जिवो सेडा म कहउछि देखो सपोज गोटे बॉन्ड अछि 100 रुपीस बॉन्ड अछि तमे रेपो रेट अनाउंस कला 7% हबो तापरे लोक माने न्यू बॉन्ड किनिबेनी नुवा बॉन्ड किनिबेनी बुझि पारछो लोक माने कोन करिवे से ओल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट रे बिकिबे काहेकि ओल्ड बॉन्ड रो कोन हबो जो ए जो बॉन्ड अछि जो बिफोर जेतो 10% थिला इंटरेस्ट ए बॉन्ड रे डिमांड बढ़िबो बुझि पार जदी ए बॉन्ड रे डिमांड बढ़िबो कोन हबो 100 अछि एटा 110 हे जिवो काहे ए बॉन्ड रे डिमांड बढ़ि गला ए बॉन्ड रे डिमांड बढ़िबोनी काहे आ भीतर इंटरेस्ट रेट कम अछि आ भीतर इंटरेस्ट रेट हाई अछि माने प्रीवियस बॉन्ड रे सपोज 110 हे गलाटा केते हबो 110 बाय 10% केते होछ एटा 9.9 बुझि पारछो आ भीतर बॉन्ड यील्ड कमी जिवो 9.9 रुपीस ही प्रॉफिट हबो माने 10 रुपीस प्रॉफिट होतला 9.9 प्रॉफिट हबो बुझि पारछो काहे सेति में बॉन्ड यील्ड कमी छै काहे तुम जो प्रीवियस बॉन्ड अछि से जो 10% इंटरेस्ट रेट दिला तार वैल्यू माने तार डिमांड बढ़ि जिवो वंस तार डिमांड बढ़ियो माने बॉन्ड रो प्राइस बढ़ि जिवो 100 थिला 110 हे जिवो
बुझी पारछ से 10% इंटरेस्ट আছে से 9.9 हिजबो किंतु ए जो बॉन्ड अछि से 100 रे के दबो सपोज 7% हिजला माने इन्फ्लेशन कट हिला रेपो रेट 7% हिला माने ये 7% ईयर रे ट्रेड करबो माने 107 रुपीस दबो सेते पई प्रीवियस बॉन्ड रो डिमांड बढ़ी जाय यदि डिमांड वंस डिमांड बढ़ी जीवो कोन हबो बॉन्ड यील्ड कमी जीवो जेमते एट कमी जाय सेते पई से कहू बॉन्ड यील्ड टेंड टू फॉल bond will tend to fall because of lower discount rate. तापर equity market benefits from cheaper capital and improved liquidity. Rupee stability supported by the $5 billion swap. এই জিনিসটা হচ্ছে $5 billion swap রে rupee stability হবে stabilize হয়ে যাব banking system 1 crore এবে কোন কইছদি 1 lakh crore open market ensures the liquidity abundant মানে through open market operations RBI is tend to infuse 110 रो 10% 11 होगा ना okay okay 110 रो 10% 11 by 10 10% होची ना 110 रो 10% कितने होची आई एम वेरी फॉरेन कैलकुलेटर कंफ्यूज कर दियो ठीक अछि देखिए हमें ओके लेट मी मतलब एटा फिनिश करे तापर मु कहू छला ओके देखो एती जान से बॉन्ड यील्ड विल डिक्रीज ठीक अछि बॉन्ड यील्ड विल रियली डिक्रीज ठीक अछि तापर एटा मु कह देबी आउथरे कह देबी हला 1 lakh crore open माने द ईयर इन्फ्यूजिंग मोर मनी इनटू द मार्केट 1 lakh crore तापर एक्सटर्नल सेक्टर रे वल्नरेबिलिटी भी हमरो कमी जिवो ए जिंसटा होबा ठीक अछि तापर व्हाई दिस तापर why this policy is significant continues the easing cycle that has delivered 125 basis point तापर signals a shift towards gross supporting एटा सब तमरे मेन साइंस राइटिंग में लिखिछि ठीक अछि डोमेस्टिक रिस्क एक्सटर्नल रिस्क ट्रांसमिशन रिस्क देखि दबो तापर एटा ए गोटे स्टेटमेंट तमे करो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला ठीक अछि प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन बुझि पारछो ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेपो रेट consider the following statement regarding repo rate कौन देछि it is the rate at which RBI lends money to commercial bank generally against government securities right तापरे it is the rate at which RBI borrows money from commercial banks generally against government securities it is the rate at which commercial bank keep deposit with RBI और आंसर कौन होबो 3 only repo rate कथा कहै छै ना okay let me see it is the rate at which RBI lends money to the commercial bank against government security ठीक अछि it is the rate at which RBI borrows money from the एटा तो पाप लागि जिवो it is the rate at which commercial bank keep deposit with RBIs आंसर कौन होबो 3 होबो आंसर इज ठीक अछि ओके तापर with reference to the Indian economy consider the following statement with respect to the Indian economy एटा करलो try to attend this question एटा करलो repo rate is the rate at which central bank of country borrows money from commercial banks within the country तापरे then variability rate reverse repo is usually undertaken to reduce surplus liquidity by withdrawing existing cash in the system एटा कोन हो एटा हबो बी हबो ना हां बी हबो एटा बी हबो ना दिस इज आल्सो रॉन्ग माने कोन बी टा कोन गोछ एटा एटा हला लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन टूल हला इट विल ऑब्जर्व द लिक्विडिटी ए रिवर्स रिपोर्ट तापरे तापरे एटा कोन एबे को गोल्डी लॉक इकोनॉमी टा को व्हाट इज गोल्डी लॉक इकोनॉमी
try to do this question एडा ही पचारिबा को आर कोन हम आंसर एडा हबो तमे try to attend this question एडा कोन हबो गोल्डी लोक इकोनॉमी कोन कहतली economy growing so rapidly that it faces risk of high inflation मना करथिल ना high inflation हो low inflation কথা कहते एडा हबनी an economy stuck in prolonged stagnation with low growth low growth देछि how can it be low growth देछि an economy maintaining steady moderate growth that is neither too fast nor too slow तापर आउट कोन an economy whose growth depends mainly on gold export how it is B कोडा हबो high growth low inflation so एडा हला C हला ठीक अछि high growth and low inflation okay that is the correct answer एडा पढी कि जीवो एडा ही तुम पचारिबा तापरे which of the following statement is true about the consumer price index for industrial workers आंकर सब जिंस डेटा चेंज हे जाछि आंकर आंकर सब डेटा चेंज हे जाछि तुमको मन रखा पड़िबा ठीक अछि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना it applies to all workers in India regardless of their sector it is solely used to determine the minimum wage it is based on fixed basket of goods and services which never changes it helps to ensure that industrial workers receiving fair wages and maintain a decent standard of living consumer price index industrial worker एटा कोन कोन हम ओनली डी होची ओके it helps to ensure that industrial worker receive fair wages and maintain a decent standard देखो सीपीआई आईडब्ल्यू है ना इंडस्ट्रियल वर्कर रो एडा कोन एक्चुअली कोन जाय इंडस्ट्रियल वर्कर केते इन्फ्लेशन फेस करछंती ठीक अछि से माने जो गुड्स उडा कंज्यूम करछंती तांकर इन्फ्लेशन केते हेची से जिंस डिटरमाइन करा जाय हला से जिंस डिटरमाइन आ से जिंस सपोज से माने जो गुड्स से माने यूज करछंती आ ता बिते जदी इन्फ्लेशन हेल ना ता बिते ता माने कोन ता माने को डियरनेस अलाउंस मिलिया कथा इन्फ्लेशन हेले माने डियरनेस अलाउंस मिलियो या वेज बितर बदला बदली हे परिबो इंडस्ट्रियल वर्कर्स पाई ठीक अछि it applies to all workers in India no managers clerks are excluded managers are one it is solely used to determine the minimum wage no dearness allowance bhi asibo it is based on fixed baskets of goods and services which never changes अरे भाई never changes माने कौन this is wrong काहे कि IW एबे केते जे 2016 रे चेंज होछ ना IW is around 2016 क्वेश्चन टिके बुझी पारलेनी ओके देखो इंडस्ट्रियल वर्क देखो जो सीपीआई अछि ना तार तीनटा चारटा कैटेगरी अछि गोटे इंडस्ट्रियल वर्कर अछि तापरे एग्रीकल्चरल लेबर अछि तापरे रूरल लेबर अछि आउ एडाला माने माने एडा कंबाइंड अछि हला सीपीआई कंबाइंड अछि ए माने कोन करंती समस्तंकर कोन करंती इंडस्ट्रियल वर्कर के लोक माने काम करछंती लोक माने काम करछंती सपोज से माने केते इन्फ्लेशन फेस करछंती तांको परिवार केते इन्फ्लेशन फेस करछे से माने भी तो डाली चावल किनु थबे ना से माने भी डाली चावल किनु थबे इंडस्ट्रियल वर्कर वाला तो तांको से माने देखिबो कि से माने केते टंगा फेस करछंती तो तांको इन्फ्लेशन सब बेले कैलकुलेट हुए ठीक अछि आउ जदी कैलकुलेट हबो ना गोटे बेस ईयर फिक्स करथबे ठीक अछि सपोज 2016 रे केते इन्फ्लेशन थिला एबे 2025 रे केते इन्फ्लेशन अछि आंकर बेस ईयर हला 2016 एटा मन रखता एबे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हेगला या रूरल लेबरर्स हेगला हमर जो एमजी मनरेगा जो सब काम करछंती से माने सब हेगला तो से माने केते इन्फ्लेशन फेस करछंती जे हमर
हमरो जो एग्रीकल्चर वाला अछंती से माने केते इन्फ्लेशन फेस करछंती बुझि परछ से माने भी तो मनरेगा काम करछंती से माने भी तो धान चाउल बिकुछंती तो तांकर बेस ईयर एबे अछि 2019 थिला हला 1986 थिला दी जनकर एबे 2019 हे जाय छै ठीक अछि आ एटा समस्त कंबाइन हे जाय छै केते 2012 अंकर 2000 एटा सब कोन कैलकुलेशन था एटा सब मंथली आरबीआई माने आरबीआई नो सब मंथली अंकर रिपोर्ट आसे आर तीनटा रिपोर्ट के लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करे अंकर रिपोर्ट लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करे अंकर रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करे प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स एटा मु बहुत फैक्चुअल डाटा कहूची ठीक अछि एटा एबे चेंज हेछि देखो एटी देखो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स केते लेबर ब्यूरो एटा के कैलकुलेट करे लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करे सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एटा भी लेबर ब्यूरो करे और रूरल लेबर के कैलकुलेट करे एटा भी लेबर करे और रूरल अर्बन कंबाइंड के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ठीक अछि बेस ईयर 2016 एटा आगुरो 1986 थिला तो एटा रिसेंटली चेंज हेछि 2019 सो एटा क्वेश्चन आगु पचारिबो आर बेस ईयर ऑलरेडी 2012 अछि है ना एटा कोन मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस फिक्स्ड बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज माने सेमन कोन खाद्य कहउचंदी केते टंका कोन सब डाली आज अछि केते 100 रुपीस अछि नेक्स्ट मंथ को सपोज माने 5% इंक्रीमेंट हेगला माने 105 हे जिवो सेटा से माने कैलकुलेट करिवे बुझि पाछो एतिकी इन्फ्लेशन हेगला द कन्फाइंड टू द हाउसहोल्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स माने एमाने कोन कंज्यूम करछंती द कवर्स द हाउसहोल्ड ऑफ रूरल लेबरर्स व्हिच इंक्लूडेड एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड एमाने सब कोन एमाने मैक्सिमम एमजी नरेगा रे आसंती ठीक अछि एमाने भी तो डाली चावल किनुथबे एमाने डाली चावल किनंती एमाने भी डाली चावल किनंती मु खाली डाली चावल कथा कहूची आ अलगा गुड्स भी अछि तांको भीतर केते रेट बढ़ुची से हिसाब रे माने डिटरमाइन करंती बुझि पार तो प्लीज एना मन रखो एटा एक्चुअली कोन कि मेन एम हला एटा ए डाटा 2019 2012 एटा हला मेन डाटा प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स ना ठीक अछि तो एटा थिला ये तो आज हमें एतिकी रखिबा विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ठीक अछि if I have forgot anything I hope the next ठीक अछि हमें नेक्स्ट में ट्यूसडे मीट करिबा ठीक अछि विल मीट इन द ट्यूसडे आ तमर किछ डाउट अछि देन लेट मी नो ठीक अछि इफ आई तमर किछ जो जिंस तो मु जानि बार अछि मु जानले मु तुमको कहि देबी केमि कोन करंती ठीक अछि so I'll be winding up the session will meet on Tuesday ठीक अछि so till then you study out of जोड़ा सब वीडियोस देखिनो सेटा वेदांग क्लासेस अछि 11 videos are there you can watch that okay ठीक अछि have a good day